our next point is oxidation state of D block first transition series element. See, we have just now seen we have scandium to zinc, that's the first series of transition element. The atomic numbers are 21 to 30. Even we know their electronic configuration, we need to know their oxidation state. What are their oxidation state? Oxidation state is number when they are going to make compound, they may form compound by having these valencies. For an example, Fe can make compound FeCl2 where it has Fe plus 2 oxidation state, and FeCl3 also where it has plus 3 oxidation state. So these are the valencies of Fe. These are the valencies of Fe. So how many valencies are possible? That's what we need to know. They may ask you this. So ये numbers हमें याद रखने हैं. I'll show you how to remember that in a very simple way. You need to know. Okay, शक्ति विक्रम फेंको निकुंज को. You start with this oxidation number. Scandium has, remember, only plus 3 oxidation number. Scandium has plus 3. Titanium has 2, 3, 4. You need to keep on increasing one number. 2, 3, 4, 5. Chromium 2, 3, 4, 5, 6. Can you see? It's increasing by one number. Then manganese 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's the maximum. Now keep on decreasing. Then the iron 2, 3, 4, 5 and 6. 2, 3, 4, 5 and 6. Then the next one, instead of decreasing, okay, 5, 2, 3, 4, 5 की जगह पे हम लिखेंगे 2, 3, 4. दो बार डिक्रीज हो रहा है एक साथ. 2, 3, 4, 2, 3, 4. And then we have 1, 2 and 2. 1, 2 and 2. First thing we need to remember is there is a sequence. Use your brain and you can learn this. That's the first thing. Then the second thing, what you need to do is, okay, they have drawn brackets over here. Can you see this? Can you see this? These brackets, actually these brackets represent the stable oxidation state. Okay, ये जैसे कि टाइटेनियम में वो तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन सबसे स्टेबल कौन सा है? +4. तो वो भी याद रखना. मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखना है. देखो पहले वाले का +3 है, वो याद रखने का है. एंड रिमेनिंग नेक्स्ट टू के 4, 4 है. नेक्स्ट दोनों के कितने हैं? 4 and 4. पहले दो ये याद रखो 3, 4, 4. उसके बाद ओके बाकी सबके 2 लगा दो. 2 तो सबके है. 2 is always there. बाकी सबके लिए क्या है? 2 है. अभी क्रोमियम के लिए ओके 2, 3 and 6 है. मैंगनीज के लिए 2 and 7 है. आयरन के लिए 2, 3 है. इसके लिए भी 2, 3 है. ये होगी आपकी सीक्वेंस तैयार. करेक्ट और नॉट? Are you following this? समझ में आ रहा है? So first thing what we had seen is oxidation state, how to remember the oxidation state. One more point which we need to know. I had asked you to learn this. The definition of transition element. Transition element की definition ऐसी है: the elements which in their ground state or any one of its oxidation state have incompletely filled d orbitals with electrons are called transition elements. What is the definition of transition element? किसको हम transition element बोलेंगे? ऐसे एलिमेंट्स को जिनका ग्राउंड स्टेट में या तो फिर उनके कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमने जितने भी देखे, किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड. तो हम देखते हैं हमें जो यहां पे बताया गया है, क्या ये सब के सब
ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है. सो टू फाइंड आउट दैट, लेट्स डू वन थिंग. सी डेफिनेशन ये है, ग्राउंड स्टेट में या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड. यू कैन सी ओवर हियर, इसकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है, इसकी भी इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है इन ग्राउंड स्टेट टिल हियर इनफैक्ट. All of these they have incompletely filled d orbitals. All of them they have incompletely filled d orbitals, correct? So निकल तक तो सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट है. क्वेश्चन अराइज होता है इन दोनों के लिए, कॉपर एंड जिंक. इन दोनों की ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड अप है, 3d10 3d10. तो ये शायद ट्रांजिशन एलिमेंट हो भी सकते, शायद नहीं भी हो सकते. अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होंगे, क्योंकि उनका ग्राउंड स्टेट में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड अप. ओके, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड अप. लेकिन कंडीशन ये खाली ग्राउंड स्टेट नहीं, उनके किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड अप होगी तो ट्रांजिशन बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कॉपर. हम कॉपर की बात करते हैं. कॉपर हैज ग्राउंड स्टेट में तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट कॉपर के पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +1 मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कहां से रिलीज करेगा, 4s में से. तो जब वो कॉपर +1 है तब उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है आर्गन 3d10. एंड दूसरा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. जब कॉपर +2 है तब एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, दूसरा कहां से रिलीज करेगा, 3d में से. तो उस टाइम पे उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है आर्गन 3d9 4s0. यस और नो. तो यहां पे ये जगह पे हम देख रहे हैं कि यहां पे 3d9 बन रहा है. क्या बन रहा है, सो वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड अप d ऑर्बिटल. एक कॉन्फ़िगरेशन पे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे उसकी d ऑर्बिटल कैसी है, इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है. सिंस एक इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है, सो कॉपर इज ऑल्सो इन दिस जोन नाउ, जो सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है. व्हाट अबाउट जिंक. ओके, कॉपर समझ में आया. लेट्स गो फॉर जिंक नाउ. जिंक का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2. तो यहां पे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. लेट्स से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, एक ही है, +2 में ऑब्वियसली वो जो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कहां से निकालेगा, 4s में से. तो बनेगा क्या, 4s0. क्या यहां का कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, नो, इट इज कंप्लीटली फिल्ड. सिंस जिंक ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन और द रिक्वायरमेंट और द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. Since it does not satisfy that, it is not a transition element. If you have noticed, when I started with my periodic table over here, can you see these colors? First transition series ke till copper they are in red color. Have you noticed zinc is in different color? Correct or not? Why it is in different color? Because it is not a transition element. It is a d block element, still it is not a transition element. Correct or not? Similar case with cadmium. Cadmium का भी यही हाल है. And similarly mercury का भी यही हाल है. Though they belong to d block, but they do not satisfy the conditions or the definitions for transition element. That definition says either in ground state or in oxidation state, d orbital should be incompletely filled up, which is not there in the cases of all these three. So that's why zinc, cadmium and mercury, though they belong to d block, still they are not transition element. Are you following this? And this will be asked in 1 or 2 mark. Give reason, which has been given in our textbook over here. First here you can see, hence zinc is not considered as transition element. Explanation is over here.
Please write over here in your textbook, give reason. आपको पूछते हैं, underline करना, zinc is not considered as transition element. Same explanation I had already explained you, so I'm not going to read from your textbook. Correct? Are you following this? समझ में आ रहा है? We'll continue further. So over here, can you see next page पे, cadmium is not considered as transition element. Give reason. So over here, next page again, mercury is not considered as transition element. Give reason.